Hello, children. Let us discuss our last chapter, our environment. So, this is included in your syllabus, and the next chapter, that is management of natural resources, it is only for internal assessment. So, chapter 15, our environment. What is environment? We have heard this word uh, environment many times through televisions, newspapers, and by the people all around us. What is environment? It is sum total of all factors, substances, living things, as well as abiotic things, non-living things, conditions and around us. So it consists of both living and non-living components, means biotic and abiotic. Living means biotic and non-living means abiotic components, each of which that has several components. These are interlinked. Now these factors, they are interdependent on each other. So in this chapter we will study how different biotic factors and different abiotic factors, they interact with each other and what is their impact on the environment. First of all, we will discuss what happens when we add our wastes to the environment. Now waste, they are of different types. Human activities, they produce lot of waste material. Like if we see in our homes we daily fill dustbin by the evening, तो हम उसमें बहुत सारे वेजिटेबल पील्स, पेपर, प्लास्टिक, कितना वेस्ट मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल जो हम उसमें ऐड कर देते हैं. So these different waste, they pollute air, water, soil, and mainly they are of two types. They are biodegradable and non-biodegradable. From the name itself it is clear. Biodegradable, degraded means broken down by living organism. Living organism, they are the microbes. And non-biodegradable, not degraded or broken down by the microbes. Now, biodegradable waste, they are decomposed into harmless substances by microbes. Examples are vegetables, vegetable peels, fruits, pulses, cereals, cotton, jute, wool, paper, leather, wood, animal dung, animal bones, all organic material that are biodegradable. And non-biodegradable means they are not decomposed, not broken down by microbes. For example, polythene bag, plastic, synthetic fibers, glass metal, synthetic rubber, insecticide, pesticide, etc. हम प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, हम कितनी देर हम उसको कूड़े में फेंकते रहेंगे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते. जब हम साल बाद, 2 साल बाद भी निकालते हैं, दे आर नॉट डिकम्पोज्ड. So next our is, so that means if we add biodegradable waste, that also affect our environment. If we add non-biodegradable, that also affect our environment. But impact of both, they are different. Biodegradable waste, of course they are decomposed, लेकिन they are you can say they are better than the non-biodegradable waste. So अगर हम biodegradable वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो पल्यूट वैसे तो नहीं करते हैं वाटर, सॉइल, लेकिन इन द लार्ज क्वांटिटी दे प्रोड्यूस. एक तो एरिया कवर करते ही करते हैं, स्पेस तो कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस फाउल स्मेल, जब उनकी माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल. देन जरूरी नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसका कोई नुकसान ही नहीं है. बहुत सारे डिसीज कॉजिंग germs they are present, and to flies or other vectors, they spread these germs to the food items or the living organisms.
otherwise they are completely degraded, so they do not pollute environment. and non biodegradable का तो कोई एडवांटेज है ही नहीं है, वो तो डिसएडवांटेज ही है कि दे ऑलवेज pollute environment. Next our topic is ecosystem. Ecosystem is a relation between the living and non-living things of the environment. An ecosystem, it consists of all the living in and living organism in an area along with non-living components and their interaction. So different types of ecosystem. कुछ natural ecosystem होते हैं, कुछ man-made ecosystem होते हैं. Even a single drop of water, that is also an ecosystem, and the large ocean or the sea, that is also an ecosystem. सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में आप बोलोगे क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर आल्सो डिजॉल्व्ड इन वाटर. So that is also an ecosystem. So natural ecosystem like forest, desert, grasslands, and mountains, ponds, lakes, ये सारे जो है नेचुरल इकोसिस्टम. जो आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम है, दे आर द गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स, जू एटसेट्रा. कंपोनेंट हम दो कह सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो लिविंग कंपोनेंट्स जैसे किसी भी इकोसिस्टम में क्या होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. और उन्हीं को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर कंज्यूमर्स, दे आर डीकम्पोजर्स. Producer means green plants which can perform photosynthesis, which can produce food. Consumer means heterotrophs. They depend upon the producer. Herbivores which get their food directly from the plants, or carnivores which get their food from herbivores, है ना, या other carnivores. तो इसी तरह से सारे के सारे कंज्यूमर होते हैं. ये हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है. सिर्फ प्लांट्स को छोड़ के, प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर्स, बाकी सारे जो है वो कंज्यूमर्स हैं. इसके अलावा डीकम्पोजर, दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डीकम्पोज डेड plants and dead animals. They decompose complex organic material and change again into the simple inorganic substances. Means they form a link between in living component and नॉन लिविंग कंपोनेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके फिर से सॉइल में, वाटर में, एयर में रिलीज कर देते हैं. तो एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक लिंक बनाते हैं डीकम्पोजर्स. सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर, दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इकोसिस्टम है. एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, मिनरल्स, ऑल दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट. यानी कि नॉन लिविंग प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर्स सारे इसी में आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. So this is about our ecosystem, and next time we will discuss the flow of energy through an ecosystem by food chain. Thank you so much.